I think we personally both had like a very good experience. We couldn't have thought of a better host to begin our podcast journey with. Personally, I think it's my first podcast, and it's actually also the first time we are doing a podcast together. Yeah. So it was really insightful. A lot of things I think I did not even know about Rishabh came out, and I hope so the same for you. But yeah, wonderful experience, and we're really thankful to TM sir for inviting us over. I think both of us, online and offline, whatever talks we had with TM sir has gotten us one step deeper into a spiritual journey. And I was like, I mean, even when we were watching the podcast at home, there's so much to learn anyway, and didn't know that it could happen in real time. So there's too many things that we are taking away from this. But yeah, I think we are a tad bit more spiritual now, thanks to TM sir. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द म्यूजिक पॉडकास्ट। जैसा कि आपने देखा है कि हम अपने पॉडकास्ट में म्यूजिक इंडस्ट्री और म्यूजिक कम्युनिटी से जुड़े काफ़ी सारे आर्टिस्ट, क्रिएटर्स और बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को लेके आते हैं। आज के जो डीजे और म्यूजिक प्रोड्यूसर डुओ हमारे साथ हैं, उनका म्यूजिक का स्टाइल बहुत अलग है। प्रोग्रेसिव हाउस, इलेक्ट्रो हाउस, ट्रॉपिकल हाउस, फ्यूचर बेस और डांस पॉप जैसे साउंड के स्टाइल पे वो काम करते हैं। उनके अचीवमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है। डीजे मैग, जो कि वर्ल्ड की एक रिनाउंड डीजे प्लेटफॉर्म है, उनमें 52nd नंबर पे उनको लिस्ट किया गया था 2016-2017 में। उन्होंने काफी सारे नेशनल और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस किए हैं। जोनीता गांधी और कविता सेठ जैसे पॉपुलर सिंगर्स के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है। उन्होंने इंटरनेशनली भी ऑफिशियल रीमिक्सेस किए हैं और कोलैबोरेट किए हैं आर्टिस्टों के साथ जैसे कश्मीर, एलन वॉकर, डेमी लवाटो एंड मार्शमेलो। जिस टुमारोलैंड फेस्टिवल के बारे में हम सब लोग ड्रीम करते हैं इंडिया से, कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक को फॉलो करता है उनको पता है कि टुमारोलैंड दुनिया का सबसे बड़ा फेमस, सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है, बेल्जियम में जो होता है। और वो इंडिया के पहले आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 4 बार टुमारोलैंड फेस्टिवल में परफॉर्म किया। इसके अलावा उनके बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारे ग्लोबल फेस्टिवल्स में परफॉर्म किया है, बहुत सारा उन्होंने काम किया है, बहुत सारे ब्रांड्स के काम किए हैं, फिल्मों में काम किए हैं, बहुत सारे लाइव शोज किए हैं। तकरीबन हर साल ये दोनों मिलके 50 से 60 लाइव शोज करते हैं। और एट द टाइम ऑफ देयर पीक, जब वो दोनों परफॉर्म करते थे, तो वो 100 से ज्यादा शोज हर साल इंडिया और इंडिया के बाहर करते थे। ऐसे ही टैलेंटेड और सक्सेसफुल डीजे एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर डुओ प्रयाग मेहता और ऋषभ जोशी हमारे साथ हैं, जिनको आप जानते हैं लॉ स्टोरीज के नाम से। ऋषभ एंड प्रयाग, वेलकम टू द म्यूजिक पॉडकास्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो आप लोग दोनों से मेरा पहला तकिया कलम वाला सवाल पूछते हैं सबसे पहले। तो एक सवाल है जो मैं सबसे पूछता हूँ कि लॉ स्टोरीज, आप दो अलग अलग इंसान हो, साथ में लॉ स्टोरीज बनता है, तो दोनों से अलग अलग सवाल है ये कि आप अपने मम्मी पापा के लिए अलग हो, अपने एक्स गर्लफ्रेंड्स के लिए अलग हो, करंट गर्लफ्रेंड्स के लिए अलग हो, दोस्तों के लिए अलग हो, सबके लिए एक अलग अलग कैरेक्टर हो, फैंस के लिए अलग हो, बट असली ऋषभ कौन है? I think असली ऋषभ is एक shy, timid person जिसको recognition चाहिए for his work and doesn't care about anything else. And when that doesn't happen, he gets very sad. So I think that's how I can sum असली ऋषभ जोशी at core. और असली प्रयाग कौन है? असली प्रयाग बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड पर्सन है, समटाइम्स ऑल्सो वेरी मूडी, बट डेफिनेटली सेल्फ ड्रिवन। काफ़ी लिमिटेड फ्रेंड्स है, काफ़ी कम इंटरेक्शन होता है पब्लिक से, बट बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिजर्व्ड। और आप लोग दोनों का जब मैं रिसर्च करने लगा था ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। तो बहुत कम इंटरव्यूज है, बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन है, और आप लोग दोनों साथ में तो आते ही नहीं हो जनरली। अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग एंड मेकिंग म्यूजिक, आई डोंट थिंक यू डू जनरली even performance nahi, so I think this is a very rare moment. In fact, first time कोई podcast पे हम साथ में आए। Yeah. और या परफॉर्मेंस, जैसे ऋषभ बता रहा था, वी बोथ परफॉर्म, बट हम इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं एक ही दिन पे, एक ही रात पे, अलग अलग सिटीज़ पे। आई थिंक मे बी 10 years ago हम साथ में करते थे एक टाइम पे, 2-3 साल किया, बट देन वी स्टार्टेड परफॉर्मिंग अलोन। तो उसके पैसे एक लॉ स्टोरीज के अकाउंट में जाते हैं? सब एक ही अकाउंट में जाता है। So that's the benefit of being Gujarati. 100%। Yeah. We're gonna rule the world. आपकी जो कहानी है ना, आई कैन अश्योर यू
कि बहुत सारे जो बच्चे हैं और बहुत सारे लोग जो कहानी सुनेंगे शायद उनको विश्वास नहीं होगा कि आप लोगों ने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या आप लोग करते हो और आप लोगों ने कहाँ से शुरुआत की। तो हम जानना चाहेंगे आप लोग दोनों की इंडिविजुअल बातें, कैसे आप लोग मिले, मिलने के बाद कैसे लव स्टोरीज की शुरुआत हुई, कैसे कैसे, तो द स्टोरी सो फार अगर आप उसको ब्रीफ में बता सके तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। We met on an online dating app. No, अब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, ऑर्कुट करके था, तो उस पे सबसे पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था वो। हाँ, एंड तब मैं थोड़ा बहुत म्यूजिक बनाता था, एंड दिस इज स्ट्रिक्टली लव स्टोरीज कैसे फॉर्म हुआ वो, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। एंड सर की एक कम्युनिटी थी, ट्रांस प्रोड्यूसर्स इन इंडिया, और मुझे आई वॉज लुकिंग फॉर लाइक माइंडेड पीपल कि कोई मेरे जैसा, बिकॉज दैट टाइम टीएस्टो, आर्मिन वैन ब्यूरेन, ये सब एक डेमीगॉड के रूप में, यू नो, ऑल ऑफ अस यूज्ड टू लुक एट देम। तो बस एक कम्युनिटी पे अटैच होना था कि आई वांटेड टू बिलोंग समवेयर। तो मैंने इनको मैसेज किया कि मैं भी म्यूज़िक बनाता हूँ, तो सर का एटीट्यूड तो एक नेक्स्ट लेवल पे था। I was 19 by the way. हाँ तो ही आप हर्ड। 19 में सर बन गए थे? हाँ ऑर्कुड पे सभी जन साथ थे तभी. सो थैंकफुली उन्होंने मेरा म्यूज़िक सुना, एंड देन वी गॉट टॉकिंग, और एक व्हेन वी रियलाइज दैट कॉमन इंटरेस्ट यही था कि वी वांटेड टू चेंज द वे, यू नो, जो इंडियन रीमिक्सेस का ट्रेंड था तभी, एंड द वे बॉलीवुड म्यूजिक वाज कमिंग आउट, एक कॉमन गोल था कि वो चेंज करना है इन सम वे और द अदर। तो वी जस्ट, आई मीन ऑब्वियसली टू स्टूपिड 19-year-old, आई वाज नॉट even 19, I was You were 16. 16, I was 19. Yeah, तो बहुत ही बड़ा ड्रीम था, बट वी गॉट टॉकिंग एंड देन वी रियलाइज दैट टू अचीव दिस ड्रीम हमको बहुत पैसे बनाने पड़ेंगे। तो yeah, we started working for other people at audio solution companies and stuff like that. Made every kind of music imaginable for no pay almost, and Bollywood DJs के लिए bootlegs बनाते थे and all of that. Then we realized कि हम सब सॉरी मैं बीच में आपसे ना Sure. कुछ सवाल पूछूंगा Yeah. क्योंकि कुछ मेरे लिए सब कुछ नया है। Yeah. मैं कंप्लीटली Sure, अनएजुकेटेड हूँ इस sure. फील्ड में। Yeah. तो आपने एक वर्ड यूज किया बूटलेग, मुझे इसका भी मतलब नहीं पता और शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, थोड़ा सा bootleg मतलब unofficial remix कि Okay. हाँ, जो आप जो रिलीज, डीजेस प्ले करते हैं आप Yeah. उनको बना के डीजेस को देते हो, डीजेस अपने नाम से प्ले करते हैं। Right. हाँ, ओके, और another term is called ghost production. पोस्ट प्रोडक्शन। हाँ, तो मतलब हमको क्रेडिट्स नहीं मिलता है, सिर्फ पैसे मिलते हैं उसके। तो वी स्टार्टेड डूइंग दैट फॉर अदर पीपल, और रियलाइज कि एक सर्टन क्वालिटी आ रही है हमारे गानों में जो वेरी लाइक एस्पिरेशनल थी एट दैट पॉइंट, कि इंटरनेशनल क्वालिटी से कंपेयर कर रहे थे हम। तो वी रियलाइज कि वाई डोंट वी डू दिस फॉर आवरसेल्व्स, कि हम खुद का एक कुछ बनाते हैं और वही लेबल्स को पिच करते हैं जहाँ पे हम लोग व्हाटएवर म्यूजिक वी हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू। And yeah, we sent some music out. One of the biggest electronica labels during that time, Black Hole Records करके था, जो one of the biggest DJs, DJ Tiesto, उसका label था। उन्होंने reply किया and then they asked us what are you guys called? नाम नहीं था, कुछ नहीं था। So बस random word play था, क्योंकि बहुत ही dark music बनाते थे हम तभी, तो love stories just kind of went together. Also, Black Hole Records, जहाँ पे हमारा फर्स्ट गाना साइन हुआ, it still is a Dutch record label. So we figured two Gujju names is not gonna cut it. Yeah. Prayag and Rishabh. It's too exotic for them. And I remember हमारे पास तभी agreement आया था लेबल से, and we were very happy. हमें वो लेबल पे साइन होना ही था, and we didn't have a name. And then it was a word play. मतलब, we randomly just thought of a few words, and he I think must have come up with Lost. I came up with stories, and Yeah. we just, I think when we started तभी इतना सोचा नहीं था कितना आगे जाएगा, and more than anything हमें खाली तभी गाने रिलीज करने थे। We didn't want to miss out on that opportunity. एक घंटा भी वेस्ट नहीं करना था, so we just randomly came up with the name, put it on the agreement, and we sent it. And this is almost 15 years back. This was 2009. 2009. Or more than that. I think 2007 we met or something, 2008, something like that. It's okay for two dudes to not remember when they met. So I think around 2008 we met, and 2009 we had our first release as Lost Stories. So, तो आप लोग पर्सनली कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? sir,
short answer is no. But I view myself as a hack. कि अगर आपको कुछ भी चाहिए स्टूडियो में, मैं वो बना के दे सकता हूँ. और मेरा आई कैन प्ले द कीबोर्ड, बट पर्सनली कि किसी के अगर कोई इस बाजू में है तो मैं नहीं बजाता हूँ. मेरा माई डैड इज़ अ म्यूजिशियन एंड जो भी आई फील कि प्रोग्रामिंग मेरी हुई है बचपन में, इट्स बिकॉज ऑफ हिम. सो ही प्लेज तबला, ढोलक एंड द बैंजो दैट यू यूज टू प्ले इन लाइक सो दैट एंड कीबोर्ड. सो जो भी I've observed him, whatever I've observed him, that much I can like play. So I don't know if you play any instruments. I don't. I mean, I don't come from a musical background. Yeah. मेरे लिए एक बहुत ही ये हैप्पी कोइंसिडेंस था. I had nothing to do with music. मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था बाइक पे and I had a dislocated wrist. So मैं complete bed rest पे था 6 महीना. And that's when I discovered music softwares क्योंकि पूरा टाइम घर पे एक कंप्यूटर था खाली. And that's how I discovered कि आप म्यूज़िक बना भी सकते हो कंप्यूटर पे, क्योंकि तभी के टाइम पे ऐसे लगता था कि म्यूज़िक प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ही बड़ी प्रोसेस होती है, अलग से स्टूडियो लगता है, घर पे नहीं हो सकता है. और तभी के टाइम पे जो भी सॉफ्टवेयर्स भी आते थे वो काफ़ी नेसेंट स्टेज पे थे, बहुत ही अर्ली स्टेज पे. Initial stage, correct. Yeah. So that's how I got into music. I don't think मेरे फैमिली में मेरे पहले किसी ने म्यूज़िक किया है. और अभी हम लोग के जो वर्किंग आवर्स है, स्केड्यूल देख के, आई डोंट थिंक एनीबडी विल इवन थिंक अबाउट डूइंग इट. बट या इट वाज अ वेरी इट वाज अ वेरी बिग कोइंसिडेंस के हम मिले ऑर्कुट पे, जैसे ऋषभ ने बताया. एंड वन थिंग लेड टू अनदर. और आप लोगों ने मतलब ऐसे प्लान किया कि कुछ सीखा सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन? डिड यू ट्रेन योरसेल्फ और इट्स लाइक? Sir, every kind of training happened on the job. Even if you talk about DJing, हम लोग के पहले गिग में पता नहीं था कि, एक पता था कि सीडी प्लेयर में सीडी डालनी है और प्रेस प्ले करना है, तो जो मिक्सिंग सीखा वो भी पहले गिग पे सीखा. थैंकफुली इट वाज नॉट दैट बैड, क्योंकि हमको सेकंड बुकिंग भी मिली सेम क्लब से. एंड सेम विद म्यूज़िक. आई थिंक मेरा एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा था विद म्यूज़िक सॉफ्टवेयर्स बिकॉज ऑफ माई डैड. तो जो भी सीखा, तभी यूट्यूब भी नहीं था. वो एक वी यूज्ड टू रीड दोस मैनुअल्स जो आज की तारीख में कोई नहीं देखता है. बट आई मीन फॉर्चुनेटली फॉर अस तभी के टाइम पे खाली मैनुअल्स ही थे. एंड एबल्टन लाइव एक जर्मन सॉफ्टवेयर है, जर्मन कंपनी, तो वो इंग्लिश मैनुअल भी थोड़ा ढूंढना पड़ता है उन केस पे. लाइक फर्स्ट थिंग इज जर्मन एंड देन इंग्लिश किधर पीछे होगा. So yeah, like he said, तभी YouTube भी नहीं था, Facebook and all just came later. So you must have started at that time. Yeah. तभी I think forums होते थे there काफी, used जहाँ to पे आप be- जाके थोड़ा बहुत पढ़ सकते जैसे हो. अभी रेडिट है वैसे टाइप के बहुत सारे फोरम्स होते थे, कम्युनिटी, लाइक माइंडेड पीपल मीट देयर. और तो आई थिंक या जो भी सॉफ्टवेयर टेक्निक्स वो सब था वो वहाँ से सीखते थे हम लोग. बट मेरे ख्याल से आप लोगों ने जब इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूजिक शुरू किया उस टाइम इतने ज्यादा उस म्यूजिक को फॉलो करने वाले लोग भी इंडिया में नहीं थे. बहुत कम थे. तो बट आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम बिकॉज इतनी छोटी कम्युनिटी थी, सब इट वाज अ गुड टाइम. वो इंस्पिरेशन कहाँ से आया? मतलब कहीं ना कहीं से तो ऐसा लगा होगा कि यार ये मेरे को करना चाहिए. आई थिंक मेरे लिए जब भी मैंने मेरा फर्स्ट गाना बनाया था, आई डिडंट थिंक कि मैं ये किसी को भेजूंगा या ये कोई प्ले करेगा. बट लकीली माई फर्स्ट सॉन्ग बिफोर लॉस्ट स्टोरीज Tiesto had supported on his radio show. और तभी के टाइम पे इंडिया से और कोई प्रोड्यूसर नहीं था जिसका गाना वर्ल्ड नंबर 1 डीजे ने वो टाइम पे बजाया था. सो आई स्टार्टेड गेटिंग दैट रिकग्निशन. और तभी के टाइम पे सबमर्ज करके जो निखिल चिनप्पा, हामिद, इनकी कम्युनिटी है, उनका एक फोरम होता था. तो वहाँ पे ही आई थिंक आई मेट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो तभी सीन में थे. And yeah, I mean later, it obviously grew in the next 3-4 years. But initially बहुत ही छोटी कम्युनिटी थी, बहुत छोटी. और आप लोगों ने काफी सारे आर्टिस्टों के ऑफिशियल रीमिक्स किए. यस सर. हाउ डिड दैट स्टार्ट हैपनिंग? सर आई थिंक कीड़ा इन्हीं से आया कि हम लोग मुझे बोलता था कि इस किसी का गाना लेते हैं, बूटलेग बनाते, भेजते हैं, अगर अच्छा लग गया तो
वो रिलीज करेंगे, ऐसा मेरे को बोला गया था, मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं है. एंड आई थिंक इवन बिफोर ही मेड अ फर्स्ट सॉन्ग दैट रिलीज्ड, वी हैड मेड बंच ऑफ रीमिक्सेस, किसी ने रिलीज नहीं किए, वो अभी भी पड़े हैं. सो बट देन आई फील कि एक हम लोग को एक वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट ये था हम लोग में कि Rebellious हाँ nature. कि ओरिजिनल से बेटर होना चाहिए रीमिक्स, यू नो. एंड नाउ ऑल्सो इफ यू गो एंड रीड द कमेंट्स ऑन प्रीटी मच ऑल आर रीमिक्सेस, एक कमेंट तो जरूर मिला गया लाइक दिस इज बेटर देन द ओरिजिनल. सो आई फील कि टू टेक समवन एल्सेस वर्क एंड ट्राई टू हैव आवर ओन touch to it, it just became like a signature for us, and we have done more remixes than originals. Originals में actually इतना मज़ा नहीं आता है जितना remix करने में आता है. So we just started sending out, I think तभी yeah, like Universal के साथ भी Devraj recognized us and he asked us to do an album on Universal, and through that we landed a few remixes. Carnival of Rust जो Poets of the Fall करके एक बैंड है सर, बहुत रोस्ट हुए वो रीमिक्स को लेके बिकॉज रॉक कम्युनिटी को EDM सुनाना मतलब पर वो एक ईगो बूस्ट भी मिला कि हम ये कर सकते हैं तो करेंगे टाइप ऑफ थिंग. देन एफ्रोजैक के लिए रीमिक्स किया था. That also happened via, I think, Universal. Yeah. Demi Lovato का भी किया था. Marshmello and Demi Lovato, yeah. That was much later, but yeah, I mean, Devraj has been really kind to us. Yeah. I think he has been one of the first people in the industry जिन्होंने हमें ये chance दिया Yeah. to make the music that we like and actually turn it into an album. But I think उसके पहले भी जितने remixes किए थे, one of the reasons was तभी इतना copyright समझता नहीं था. ना फर्क पड़ता था, मतलब करना है तो करना है, डालना है तो डाल दिया. एंड इतने सारे प्लेटफॉर्म्स भी नहीं थे, सो थोड़े बहुत ही यू नो मीडियम्स थे जहाँ पे आप रीमिक्स अपलोड कर सकते हो. SoundCloud So we and stuff, yeah. sort of, I think, got away with a lot of stuff, but फिर obviously थोड़ी बहुत समझ आने लगी क्या होती है कॉपीराइट्स वगैरह वगैरह. So तो पहली बार ऐसा फील कब हुआ कि भी अराइव हो गए? सर फर्स्ट सॉन्ग पे ही ईगो बूस्ट हो गया था कि क्योंकि बिगेस्ट लेबल हम लोग आई थिंक सोच भी नहीं सकते थे. एंड दैट इज ऑब्वियसली दैट सीन इज नॉट रेलेवेंट अभी, बट फॉर लाइक टू बॉयज टू गेट अ सॉन्ग आउट ऑन दैट लेबल वाज लाइक कि हम लोग तो मतलब वी आर ऑन क्लाउड 9 ऑनेस्टली. फिर it just became like an endless process of good things that started happening to us. Nikhil Chinnappa also recognized us, and then उसके पहले ज़्यादा gigs नहीं play किए थे, but then he randomly announced Lost Stories will be playing at Sunburn next year, and Sunburn was again a big deal कि might not be अभी, but that time it was like a big Still deal. one of the biggest festival for this Yeah, yeah. music. It is, yeah. hands down. But yeah, and so many great things were happening. So we were like, "Hey, boss, we have arrived." I had no idea of like what we were gonna be put into, but yeah, only grateful for like those times. And जब आपने लाइव कॉन्सर्ट करना शुरू किया, Yeah. what was your peak? कितने शोज किए आपने साल में पीक में? I 100 Yeah, plus. I think we must have crossed 100. तभी साथ में मतलब अलग अलग करते थे. हाँ. So the 100, number 120 double for हो sure. जाता था. Yeah. But Manage and move. 120 है, 130 yeah. Yeah, I mean December कभी-कभी 45 shows होते थे, and then people would comment it's not even possible, इतने दिन भी नहीं होते. And we would be like कि 2 जन है और you know दोनों अलग-अलग shows कर रहे हैं. Yeah. But yeah, I think average अभी भी 60-70 shows हम करते हैं साल के. Wow. जबकि आपने करना बंद कर दिया. I have taken a break. Yeah. उसके बाद भी? Yeah. Wow. And don't mind me asking, what's the average ticket size for these shows? Like, what's the average revenue for these shows? I Just think for a ballpark. टाइप ऑफ शो पे डिपेंड करता है. मतलब वी डू वेरी लिमिटेड क्लब शोज, बहुत लिमिटेड होता है. बट कैंपसेस होता है वहाँ पे टर्न आउट आई थिंक अराउंड 1000 से 5000 होता है. और फेस्टिवल्स जो Tier 2 सिटीज़ में होते हैं वो थोड़े कम बड़े होता है, एंड देन मेट्रो सिटीज़ के काफ़ी बड़े होता है. सो रेंज कुछ भी चल होता है, मतलब डिपेंडिंग कौन प्रमोटर है, ब्रांड है, इन्वॉल्व नहीं है, उसके हिसाब से. We start from around 5 lakhs, goes up to depending on whoever's involved. Fantastic. I was just trying to give a gist to the viewers कि there is a
career in this. 100%. It's a legitimate business. There are numbers which back the idea and there is audience Yeah. जो सुन रही है वो म्यूजिक. और आप लोग सिर्फ अपने गाने प्ले करते हो जो आपने रीमिक्स किए ऑफिशियली, या आप दूसरे गाने भी प्ले करते हो? It's a mix of a lot of things क्योंकि depend करता है if it's sometimes people just want to have fun on a Saturday night, so we have to assume the role of an entertainer, but sometimes people come to listen to only Lost Stories का music, तो तभी like we make edits of other people's songs in our own way, bootlegs again, so बाकी लोग के लिए करते थे तो हमारे लिए भी we do it, and there's a good following for like I think काफी तो blow up हो गए थे randomly. एक जोनीता के साथ किया था वसीगरा करके था, जरा जरा. हाँ जरा जरा वन, सो मतलब रैंडमली बनाया था. माधवन also. Yeah, like Yeah, they posted reposted, also. they tweeted about it. even the director put it out and stuff. So I think grown up listening to Haris Jairaj sir and all. So it's a big deal for us. But yeah, we play pretty much like whatever we feel might work there. और Tomorrowland कैसे हुआ फिर? Tomorrowland, the first one I think 2015 में हुआ था, and luckily तभी काफ़ी जन थे हम जिसके साथ बात कर रहे थे. इनफैक्ट हम खाली Tomorrowland के लिए नहीं बात कर रहे थे. Europe tour. Yeah, we were working on a Europe tour क्योंकि हमने एल्बम रिलीज किया था यूनिवर्सल पे 2014-15 में, जिसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था. Followed by Afrojack remix and all. And we had started working with Spinning Records, which Yeah. was one of the biggest dance music labels. अभी भी है, I think. तो so I think वो inevitable था कि Tomorrowland, मतलब सबके दिमाग में back of the head की idea था कि we have to, get a slot there. So we started working with the relevant people who helped us achieve that as well. So yeah, I think 2015. बेल्जियम की एक या दो एजेंसी थी जिन्होंने 13 से 15 शोज किए थे हमारे साथ, लाइंड अप अराउंड 15 shows. in like 1.5 months. So जब भी हमने फर्स्ट Tomorrowland प्ले भी किया था तभी we were in Europe way before Tomorrowland actually तो 2 happened. महीने थे. Yeah, बहुत सारी कहानियां हुई होगी फॉर श्योर. right. और वो कहानियां बहुत जरूरी है, पता है क्यों? क्योंकि आज भी 15 साल बाद भी बहुत सारे बच्चे अभी 15 साल के होंगे, 16 साल के होंगे, 19 साल के होंगे जो ये करियर परस्यू करना चाहते हैं, बट उनके पेरेंट्स को या उनके आसपास के लोगों को नहीं पता कि Right. ये ऐसा कुछ है भी और ये पॉसिबल भी है. तो आपके साथ जो जो हुआ था वो अगर आप बताओगे तो शायद थोड़ा सा हिम्मत मिलेगी लोगों को, ये समझ में आएगा. राइट. आई थिंक जब भी हमने स्टार्ट किया था और अभी तक लेके जो एक मेजर डिफरेंस है, तभी कंपटीशन बहुत कम था. राइट. अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट तभी क्योंकि कंपटीशन कम था, अगर आप कुछ भी अच्छा करते थे तो इमीडिएटली आपको रिकग्निशन मिलता था. एंड आई थिंक वही हमारे साथ हुआ जब भी हमने चालू किया था. अ लॉट ऑफ मीडिया पब्लिकेशंस जैसे बॉम्बे टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, आई रिमेंबर उन्होंने हमारे बारे में लिखना चालू कर दिया था विदाउट नोइंग टू मच के कौन से टाइप का म्यूजिक है. तो ये एक जो पर्टिकुलर चीज़ है जो रिकग्निशन मिलता है आपको, और तभी के टाइम पे प्रिंट मीडिया बहुत ही बड़ा होता था. तो ये हमारे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए, पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत ईजी हो गया था तभी, क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड आप क्या बना रहे हो, बट जब भी आपका नाम पेपर में आता है फोटो के साथ, वो भी व्हेन यू आर 19 और 20, देन दे आर रिलीव्ड के ठीक है जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, एंड मे बी इट हैज़ अ फ्यूचर, क्योंकि कोई सीरियसली इसके बारे में लिख रहा है. सो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी कर रहे हो आप करते रहो, कंसिस्टेंटली करते रहो, कहीं ना कहीं जाके आपको उसका रिकग्निशन मिलेगा. एंड इट कुड बी इन डिफरेंट फॉर्म्स. हमारे लिए तभी के टाइम पे प्रिंट मीडिया एक फॉर्म ऑफ रिकग्निशन हो गया. मे बी आज के डे में वो इंस्टाग्राम, समथिंग गोइंग वायरल कुड बी अ फॉर्म ऑफ रिकग्निशन फॉर एन आर्टिस्ट टू ब्लो अप. सो द आइडिया इज डोंट गेट टू कॉट अप विद द ट्रेंड. हम भी, क्योंकि हमारी अकेडमी है बॉम्बे में, एंड हम बहुत ही एस्पायरिंग प्रोड्यूसर्स को डे इन डे आउट मिलता है जो काफ़ी डिफरेंट सिटीज़ से आते हैं, Tier 2, Tier 3 सिटीज़, एंड बॉम्बे उनके लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती है कभी कभी. म्यूज़िक इंडस्ट्री तो अलग ही है,
सो जब भी वो बॉम्बे भी आता है तभी उन्हें थोड़ा ओवरवेल्म्ड लगता है, राइट? इतने सारी चीज देख के, समझ के। बट जब भी वो आते हैं यहाँ पे, वो ही सोचते हैं कि हम किधर से चालू करें और कितना टाइम लगेगा, जिसका कोई आंसर नहीं होता है। द ओनली थिंग इवन वी एंड अप टेलिंग देम इज, आपको जो बनाना है आप बनाइए और कंसिस्टेंटली आप वो पब्लिश कीजिए। द मोर वर्क दैट यू पुट आउट, बेटर द चांसेस आर ऑफ समबडी डिस्कवरिंग। आपकी फैमिली क्या करती थी बिफोर? Business. Parents have retired now, but I come from a Guju family, so pure business. पहली बार आपने जब म्यूजिक सुनाया था Yeah. फैमिली में, तो आपने कभी सुनाया होगा, तो क्या बोला उन्होंने? I think the first time मैंने जब भी म्यूजिक सुनाया था, उन्होंने बोला कि वोकल कभी आएगा, मतलब कोई गाने वाला है या नहीं गाने वाला है, क्योंकि तभी इसमें गाना तो नहीं है। मतलब तभी हम ट्रांस बनाते थे एंड वो 6 या 7 मिनट का गाना होता था। They are like कि कभी आएगा, बट आया ही नहीं। So they were not that convinced कि ये भी हो सकता है। But yeah, I mean, somehow they managed to support. I also have 4 sisters and 3 elder sisters and a twin sister. तो तभी मेरी जो elder sister थी वो UK में थी. So she was still aware कि क्या scene है वहाँ पे, कि ऐसा भी music बनता है. So she helped me to sort of convince my parents कि नहीं, ये भी form होता है music का. Maybe इंडिया में नया है but होता है, ऐसा ये नहीं है. And she helped me with my first sound card, my professional headphone, जिसके through मैंने actually music बनाना चालू किया. So sometimes, your family comes together to push you and also sort of convince your parents. तो फिर पहली बार चेक आया होगा तो सॉर्ट हो कैश आया था। Cash ही आया था तभी. I don't think तभी royalties जैसा Yeah. कुछ था. We never even got paid कुछ एडवांस है, ऐसा कुछ बहुत लेट आया था। कि we just happy कि अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कुछ करने का, तो या तभी के टाइम पे वो रॉयल्टी स्टेटमेंट्स नेदरलैंड से बेचते थे, जो आधे टाइम Post. पहुंचते भी नहीं थे, हाँ। क्योंकि एड्रेस गलत है, ये गलत है, किसी और को मिल रहा है रॉयल्टीज। वो भी हुआ है। क्योंकि there is another ऋषभ जोशी, सेम म्यूजिक प्रोड्यूसर, सेम लेवल पे है, तो उसके रॉयल्टीज मुझे आते थे, मेरे रॉयल्टी उसको जाते थे। सो So, मैं रॉयल्टी स्टेटमेंट देखता था, ऋषभ के कभी भी ऐसे 15-20 यूरो ज्यादा होंगे। वी हैव एन इक्वल शेयर हर एक गाने पे, हम लाइक कि ऐसे हो नहीं सकता है, क्यों हो रहा है? यू गो और उसका कोई गाना है जो हमारा नहीं है, उसकी रॉयल्टीज ऋषभ को मिल रही थी, सॉन्ग राइटर रॉयल्टीज, नॉट ऑन द मास्टर। सो और आपने लव स्टोरीज एकेडमी की बात की, आप लोग काफ़ी लव स्टोरीज एकेडमी का आइडिया कैसे आया, कब शुरू किया और क्या करते हैं आप पे? अकेडमी हमने चालू की 2016 में। आई थिंक तभी तक हमने ऑलरेडी एक एल्बम रिलीज कर दिया था यूनिवर्सल पे। वी आइडेंटिफाइड कि एक बहुत ही बड़ा म्यूजिक एजुकेशन का गैप है इंडिया में। स्कूल्स तभी भी थे, कॉलेजेस तभी भी थे, बट वो काफ़ी डेडिकेटेड थे फॉर्मल कोर्सेज की तरफ। मतलब ऑडियो इंजीनियरिंग के आपको 3 साल के कोर्स मिलेंगे, बट म्यूजिक प्रोडक्शन का ऐसा डेडिकेटेड कोर्स नहीं था। सो वहाँ से हमें लगा कि मे बी वी शुड ब्रिज दिस गैप, कंसिडरिंग काफ़ी जन हमें आके पूछते थे कि आप म्यूजिक कैसे बनाते हो, आप रीमिक्स कैसे करते हो। सो वी थॉट ऑफ टेकिंग अ वेरी स्मॉल प्लेस इन अ गराज, नॉट बिकॉज हमने एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सुना था, बट वी ऑनेस्टली एट दैट टाइम कुड ओनली अफोर्ड अ गराज। सो बहुत ही ऐसा एक 200 स्क्वायर फीट का गराज था, जहाँ पे आई थिंक 3 या 4 जन आते थे सीखने के लिए, और वो ग्रो होके अभी वी हैव लाइक 2 गुड places. We do train like 100-150 students offline in a year, and this another online courses जो होते हैं. So the idea starting से यही था कि जितना help कर सके उतना help करेंगे, but in a formal way. जो free जब भी आप कुछ भी करते हो, people don't take you seriously. So we thought we'll charge for it. So then people get serious, they come down, they learn, they put in some effort. And yeah, started very small with a very simple idea कि एक gap है, वो bridge करना है, and then see how it goes. तो आप लोगों के हिसाब से ये जो म्यूजिक प्रोडक्शन या डीजेइंग है, इसका कितना पोटेंशियल है इंडिया में? आई थिंक आज की तारीख में काफ़ी पेरेंट्स समझने लगे हैं कि म्यूज़िक एक पैशन नहीं है, इट कुड बी अ फुल ब्लोन करियर। जो पहले के टाइम पे थोड़ा कंजर्वेटिव वे ऑफ थिंकिंग था, वो अभी काफ़ी चेंज हो चुका है। तो और अभी म्यूज़िक प्रोडक्शन करने से बहुत सारे एवेन्यूज़ भी है जहाँ पे आप वो यूज़ कर सकते हो।
जैसे खुद के ही गाने रिलीज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसी और के लिए भी काम कर सकते हो. आप अगर देखोगे नॉट ओनली इन इंडिया, इवन आउटसाइड, मेजोरिटी ऑफ द सिंगर्स वो बीट मेकर्स नहीं होते. सो आप उनके लिए काम कर सकते हो, आप डीजेस के लिए काम कर सकते हो. और ये थोड़ा नॉलेज, अवेयरनेस सब लोग को आने लगा है. सो पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग म्यूजिक प्रोडक्शन वेरी सीरियसली, एंड इवन डीजेइंग खास करके, क्योंकि इतने सारे भी फेस्टिवल्स होते हैं, शोज होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं. इंटरनेट की वजह से अगेन द रीच हैज become very big. The virality Right. factor and all of that. Yeah. So I'm glad like people are taking it very seriously. खाली पैशन जैसे नहीं, but as a profession. हम लोग स्पेसिफिक बात करते हैं. जैसे आप लोगों ने काफ़ी अलग अलग तरीके के काम किए, तो हर जॉनर से ना एक एक प्रोजेक्ट उठाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं. जो आपने ऑफिशियल रिमिक्सेस किए हैं, Yeah. उसमें से एक मोस्ट मेमोरेबल रिमिक्स कौन सा है आप लोगों के लिए? You want Faded, I think. Alan Walker Faded, I think 10 साल होने को आएंगे almost. You still play it anywhere and like people relate to it so much. And I think that's हम लोग दोनों का favorite वही. And it started a wave. हुआ कैसे? Faded, I remember मुंबई में एक नेटवर्किंग इवेंट था, एम्स्टर्डम डांस इवेंट, जब भी मुंबई में फर्स्ट टाइम हुआ था. AD, एंड yeah. हम तभी बात कर रहे थे, हम पैनल पे थे, और किसी ने क्राउड में से हमें पूछा था व्हाट डू यू थिंक अबाउट फेडेड. और तभी और एक आर्टिस्ट था जू, वेरी फेमस, उसका भी गाना फेडेड ही था. Yeah, it was more popular that time. हाँ, and we got confused, like he's talking about this artist. We had not even heard of Alan Walker at that point of time. And then we realized कि It's a big deal. तभी के टाइम पे वो ओरिजिनल गाना ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका था. एंड देन आई थिंक सोनी गॉट इन टच विद अस, दे वांटेड अस टू बी ऑन इट, क्योंकि उन्होंने हमारे पास्ट रीमिक्सेस सुने थे, एफ्रो जैक वगैरह जो भी किए थे. एंड जब भी ये रिक्वेस्ट आई थी, वी थॉट ओके, विल डू व्हाट वी डू, बट वी नेवर थॉट ऑफ एडिंग अ फ्लूट. It was a very last minute, 2 days before submission वाला Yeah. scene था. पूरा गाना बन चुका पूरा था. गाना I was I think making the song, मैं शायद एम्स्टर्डम में था, कुछ टूर चल रहा था, and we finished the song there. सब मिक्स मास्टर भी कर दिया था आई थिंक, और कुछ मिसिंग लग रहा था, पर वो फ्लूट का आइडिया ही नहीं आया था. एंड आई थिंक आई हैड रिटर्न बैक टू द होटल, थोड़ा मैं टिप्सी था, और मैं सम्मी मेरी वार सुन रहा था ऑन कोक स्टूडियोज चैनल, QB एंड bunch of people. और उसमें वो फ्लूट प्लेयर है, ही वॉज कैरिंग द सॉन्ग, एंड मतलब आई वॉज वेरी इमोशनल. तो मैंने फेसबुक पे उसको एक मैसेज डाल दिया, भाई कोलैबोरेट करोगे, एक गाना है आगे आगे फटने वाला है गाना, कोलैबोरेट करोगे. Expecting no reply, and I've gone to sleep, and next day I saw there's a reply. It's like, hi Rishabh ji, would love to do it. उन्होंने ये जो हुक भेजा फ्लूट का, we instantly added it, sent it to Sony, remix approve हो गया, and like I mean it was like it's still the last song in all our sets, you know. I remember after Rishabh added those flutes on the song, he called me and he's like, एक टिश्यू बॉक्स बाजू में रखना, क्योंकि गाना बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया फ्लूट के बाद, and it actually sounded beautiful. और पूरा मतलब किसी ने सोचा नहीं था वो टाइम पे कि टू यूज फ्लूट एज अ पार्ट ऑफ द ड्रॉप, क्योंकि ड्रॉप में इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में ज़्यादा शार्प एलिमेंट्स होते हैं, ज़्यादा लाइक हैवी सिंथेसाइजर टाइप ड्रॉप एलिमेंट्स होते हैं, बट लाइक वी ट्राइड एडिंग अ फ्लूट एंड इट काइंड ऑफ वर्कड. सो And that, I mean, unknowingly became our sound. yeah, like a happy accident sort of a thing. Yeah, very light, but हाँ. So how do you define your sound? अगर कोई बोले कि what is the sound of Lost Tones? I think for me, it's a good blend of Indian touch. मतलब वो Indian touch is not only a flute, could be anything, could be a rhythm, could be an instrument, could be the way a vocal is sung or recorded, with electronica. So that's what I think. But also maybe sometimes it's very dark. So yeah, it's a little Because it's coming from here, probably that's why. yeah. Okay. And you've also done a lot of originals. Which is the most closest to you? Which project? Original song? I think there is a big list. I think everything मेरे लिए the album that we did on Universal is very special, क्योंकि वो डेब्यू एल्बम था, एंड आई थिंक फॉर एनी आर्टिस्ट एल्बम से बड़ा जनरली कुछ होता नहीं है. सो दैट और मे बी समथिंग दैट हम अभी जो रिलीज करने वाले हैं, दैट आई रियली लव. लाइक आई थिंक
आफ्टर एल्बम अभी हम जो रिलीज करने वाले हैं हैज गॉटन मी इक्वली सिंगल एक्साइटेड. और एल्बम? It's a larger body of work. Let's just say that. So are we okay to talk about it? Yeah, sure. Yeah. I think हमारे जो बेस्ट गाने हैं ना वो कभी रिलीज नहीं होंगे because of some or the other mess up that has happened. You know, और जो भी आते हैं स्टूडियो में हम सुनाते हैं वो गाने, everyone loves it, and then they'll be like ये कभी बाहर होने वाला है. I'm like never. सर बहुत इश्यूज होते हैं कभी कभी. इफ यू आर कोलैबोरेटिंग विद समवन द ऑपोजिट पार्टी कुड बी अ कंप्लीट नट हेड. यू नेवर नो, दे माइट बी रियली टैलेंटेड बट लाइक might not understand music business at all. I mean, sometimes like if you're, I'm not gonna say any names, but you know, like if you want half the share on a song, you need to invest half the money also. तो एक थे, उन्होंने बोला, how dare you ask me for money? People like you know, get on people like me, like our backs to become famous and stuff like that. So then it got really personal. But it's also one of the best songs that we have. So वो बहुत bittersweet था कि ego पे भी आ गया अभी और मतलब गाना भी release करना है. So why don't you sell it to a label? Let them invest. I'll tell you, the story goes a little bit beyond. So this particular person took that same instrumental to another set of producers. उनको बोला कि ऐसा कुछ बनाते हैं. So the producers almost copied the version that we made. They had a problem with that singer. तो उनको निकाल दिया. Now a version of something we have made is out with completely different set of people. And we can't release ours because if we do, तो लोग बोलेंगे copy है and stuff. So it's stuff like this also happens. Okay. Yeah, it's a lot to take in, but Obviously, live has been one of the biggest part of your life. Sure, yeah. So live का एक memorable experience. सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया? Actually सबसे ज़्यादा problem कहाँ है? पहले उस पर बात करते हैं. सबसे बसड़ वाला ऋषभ के लिए हर एक शो में प्रॉब्लम ही मेरा हुई कुछ है. लक का पास्ट लाइफ कर्मा कुछ तो है. ये सबसे लकी है सर, पता नहीं चलता है. जेन्युइनली आई थिंक सबसे ऑर्गेनाइज्ड शो आप मतलब एक 10 जन की टीम भी जाएगी अगर ऋषभ के साथ टू एंश्योर के ये होटल है, ये फ्लाइट है, एक गाड़ी के साथ कोई रुका है बाहर रिसीव करने के लिए, तो भी आई कैन गारंटी यू अगर ऋषभ जा रहा है तो प्रॉब्लम आएगी. Maybe मेरे expectations high and like you just have no expectations from the show. मेरे ख्याल से आप घर के वो बच्चे हो जो बर्तन तोड़ते रहते हैं इधर से उधर. हाँ. टूटता रहता है एक्चुअली. आते जाते. Yeah, Rishabh I think has very too many memorable experiences. I think best not to ask me about सबसे बजर शो कौन सा था. But for me I think सबसे best show I'll tell you. और उसमें भी थोड़ा तो प्रॉब्लम था. एक उशवाया करके इट्स वर्ल्ड्स बिगेस्ट नाइट क्लब इबीजा में. तो मैं वहाँ पे 2011 में गया था फॉर अ कॉन्फ्रेंस और मुझे पैनल पे डाल दिया पता नहीं क्यों. और मैं उस पर भी लेट हो गया था. पैनल सब हो गया. देन वी वेंट टू दिस क्लब एंड देन वो एक विजुअलाइजेशन हुआ कि आई वांट टू प्ले हियर 2011 में. अगेन कुछ ना लेना देना मेरा वो टाइप के म्यूजिक से, नन ऑफ दैट स्टफ. और वो आगे जाके आई थिंक 2018 में वो मैनिफेस्ट हुआ एंड आयुष्मान टोल्ड अस कि there's a booking at Ushuaia, like would you like to play? I'm like obviously. तो फिर हुआ, हम गए, विला बुक किया, all the boys and all of that. गिग पे पहुंचे, me and Zayden Sahil were doing a back to back, first DJs for the day. और हम लोग ने चालू किया प्ले करना. क्राउड में एक बंदा खड़ा है, आयुष्मान. इतना दिल टूटा. मैं बोला कि मम्मी को क्या बोलूँगा, इतनी दूर आए हैं बजाने. And she knew like this club is a big deal for me. It's like what will I tell my mom, and like all those thoughts were happening. बाद में 15 मिनट बाद पता चला बोले गेट खोला ही नहीं है. और जब गेट खुले सर पूरा वेन्यू पैक हो गया. एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब सेरोटोनिन फ्लो हो रहा था. एंड आई वाज लाइक कि ओके दिस इज लाइक गॉड just flipped a switch and like something great happened. But yeah, I think that was like one of the जो I think gig की booking fee थी सब हम लोग ने वही रेस्टोरेंट में spend कर दी to buy shots for everyone. Like we're so happy. So yeah. I think for me, God has been kind. Shatrughan has worked very hard lately. जितने भी shows हो रहे हैं काफी अच्छे हो रहे हैं. Like I've been enjoying a lot. I think majority artists grow out होता है, right? Like they start growing out of something that they do very often. मेरे साथ ये reverse में हुआ है. Like earlier I did not enjoy playing shows that much, and now I've started enjoying a lot. So lately जितने भी हम campuses कर रहे हैं, IITs, IIMs, I think all the shows have been really nice. Most memorable one मेरे लिए club shows होता है क्योंकि it's very intimate.
क्राउड कम होता है एंड मेरे लिए पर्सनली बहुत मैटर करता है टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल वांट. You can be a different set also. Yeah, and it's much easier to read the crowd. Campuses में 1,000, 2,000 people are there always, and it gets very difficult. Crowd भी बहुत दूर होता है. So I really like club shows in the sense, and तभी के टाइम हम हमारे सब नए गाने सब नए हैं. Yeah, we get to सब test a lot bootlegs. of, क्योंकि 1-2 बजे के बाद everyone is set. तो Yeah. रियल रिएक्शन मिलता है कि गाना चलने वाला है नहीं चलने बट वाला वो काफी टाइम प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि प्रमोटर आता है बोलता है कि अरे कैंपस में तो वो बजाया था इसलिए ये बुक किया और यहाँ पे आप ये बजा रहे हो. सो बट या आई थिंक आई एंजॉय क्लब शोज. और आपने कॉर्पोरेट भी बहुत काम किए. Yeah. अपने कोका कोला वाला आई थिंक अरमान एंड Yes. अल्लू अर्जुन वाला ट्रैक आप लोगों ने किया था. एंड देन जैक एंड जोन्स के आप ब्रांड एम्बेसडर भी थे. Yes. जैक एंड जोन्स आई थिंक हमारा फर्स्ट ब्रांड इंडोर्समेंट था. Like a हमें तो big पता deal. भी नहीं था कि Yeah. क्या होता है ब्रांड इंडोर्समेंट एंड अचानक आपको पता चलता है कि आपको 1 साल खाली जैक एंड जोन्स फ्री कपड़े मिलने वाले हैं. आपको 1 साल. एंड वी वर सो एक्साइटेड क्योंकि एवरी मंथ हमें जैक एंड जोन्स के शॉप पे जाना था एंड वी हैड टू शॉप फॉर फ्री एंड दे पेड अस लाइक अ बजट. मतलब आप आपके फैमिली के लिए भी कपड़े ले सकते हो तो भी आपके पास पैसे My बचेंगे. Coco's also wearing Jack आई and थिंक Jones. 3-4 महीने के बाद वी वर टेकिंग एवरीवन के आप प्लीज आ जाओ. अभी भी चालू है. नहीं सर, अब रणवीर सिंह ने वो ले लिया हम लोग से. सो But yeah, I mean, first 3 months, Rishabh and I used to get very excited कि first week of the month जाते हैं नए कपड़े. By 7th, 8th month, we were yeah, like, we used to go in an auto, come back in a cab. So with like a lot of clothes. and international अगर तभी tour होते थे तो उन लोग double budget देते थे. Yeah. So Tomorrowland के time पे when we went, we took 2 suitcases full of Jack and Jones. और वो मतलब we lost that luggage for like whatever. तो फिर वो लोग they managed to get us clothes from Jack and Jones in Europe Yeah. and stuff. क्योंकि वो Well, पहनना even था. better. हाँ, क्योंकि Yeah. But I think पैसे दिए that- तो पहनना पड़ेगा वैसा टाइप का सीन. वो बहुत ही अच्छा endorsement था. I think we really love the brand. They love the music. Yeah. Free के कपड़े ऊपर से पैसे. So और आपकी करियर में सबसे यूनिक डील कौन सी रही है? I think Coca-Cola, hands down. yeah. To make a song, firstly हम लोग को क्यूरेशन के लिए वो प्रोजेक्ट पे बुलाया गया था. And the first day onwards, I kept telling Prag, we should be making this song. Don't you remember? Every time we were going through, we were like trying to hire producers, we were trying to hire everyone. 3 लोगों के साथ वो गाना बनाना था. Yeah. And I just kept telling him we should be doing this. And then somehow again manifested it. पता चला कि somebody dropped out. And Ayushman asked like, you guys are down to do this? We're like, obviously, पूरा idea ready था कैसे करना है. So to mix Telugu, Hindi, K-pop. Korean, K-pop, English, all in a catchy song. It was a challenge, but like, it was one of the most stressful times. Yeah. But like, hands down, one of the most unique projects like we have worked on. So, and we had no idea like it was going to be like Coke Studio and all of that. हम लोग को लगा कुछ ad type रहेगा. So yeah, I think both Arman and us, we are like really proud of that project. The way we managed to keep our sanity through that project. So Yeah, I think that's the only thing, right? जब भी brand involve होता है there are too many people to like. yeah, like उनका सबका feedback लेना पड़ता है. Yeah. But yeah, supervision से वो project चालू हुआ था and we finally ended up being on it. और आप लोगों की मैनेजमेंट कब शुरू आई लाइफ में? आयुष्मान वाली तभी वो OST हुआ करता था. OST से पहले I think we are the second artist Ayushman signed. Zedin was the first, if I'm not wrong. Chetas. Chetas was Yeah. the first. Yeah. So I think 2016, 2015, 2016. Yeah. We went to Ayushman. We told him कि we are playing at Tomorrowland. हमको पैसा चाहिए. पैसे नहीं है जाने के लिए. We wanted to make a whole documentary around it and all of that. And yeah, he delivered. Like the Jack and Jones deal was like within a month or something. Yeah. And तब से we thought like we should work together. तब हमारा एक दूसरा manager हुआ करता था. But then we realized that our vision was like matching more with Ayushman that time. So we just decided to. I think throughout our careers हमारे friends ने ही हमें manage किया. जब Don't भी know if that's a good thing. I mean, जब भी Ayushman until 2015 we had a friend Deepak, very good friend, who used to manage us because उसे बहुत अच्छा लगता था हम जो कर रहे थे. More passion than like. Yeah, and even Ayushman, like we became great friends first, and then we I think he was a fan first. Yeah, he was. How do you like me now? I think he Yeah. heard.
So yeah. Yeah. और अभी अगर मान लीजिए आप लोग 100 रुपए का रेवेन्यू करते हो टोटल, कितना रेवेन्यू कहाँ से आता है? व्हाट इज द पोर्शन ऑफ रेवेन्यू? 60 rupees shows, 20 rupees royalties, and 20 rupees brands and all. Sometimes it's actually 20 rupees from royalties. Quite literally. एंड अभी थोड़े से एकदम स्पेसिफिक बातों पे आते हैं. मैनेजमेंट कितनी जरूरी है आर्टिस्ट की लाइफ में? आई थिंक मेरे हिसाब से इट डिपेंड्स आप करियर के कौन से स्टेज पे हो. अगर आप जस्ट चालू कर रहे हो, इफ़ यू आर एस्पायरिंग, मैनेजमेंट कम्प्लीटली अननेसेसरी है. मैनेजमेंट का काम होता है आर्टिस्ट का विजन आगे लेके जाना. बट काफ़ी एस्पायरिंग आर्टिस्ट अभी आते हैं सोच के कि अगर मुझे मैनेजमेंट मिल गई तो मेरा काम आसान हो जाएगा या मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, मैं खाली यही करूँगा. Maybe they depend on the management to give them a vision. करेक्ट. बट हर एक आर्टिस्ट का विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप आपके मैनेजमेंट को दे सके और वो उनको एम्पलीफाई कर सके या आगे लेके जा सके. एस्टैब्लिश आर्टिस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मैनेजमेंट, क्योंकि कमिटमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, नंबर ऑफ शोज बढ़ जाते हैं, ब्रांड डील्स आती है, प्रोडक्शन वर्क होता है. सो इन दैट सिनेरियो एज एन आर्टिस्ट आई एम वेरी श्योर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अकाउंट्स संभालना, बुकिंग संभालना. तो मैनेजमेंट या इवन अ मैनेजर इज समटाइम्स रियली हेल्पफुल. बट आई थिंक इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, यू कैन फाइंड अ फ्रेंड हु कैन हेल्प यू आउट. मैनेजमेंट या मैनेजर जरा भी इम्पोर्टेंट नहीं है. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप गाने बनाओ और गाने डालो, बस. और आपकी टीम में अभी कौन कौन है आप दोनों को छोड़ के? शत्रुघ्न है. Shatrughan is there, and Ayushman, we talk to him mostly directly about everything. And then we have a few people who handle some of the back end. There's Murtuza who handles some of the back end. I think bookings is a separate thing also. Like there are different people for bookings and stuff. So yeah, I guess. So there are multiple small teams जो brands देखती है, जो A&R, जैसे Murtuza, he helps with coordination between artists. Yeah. For example, Shatrughan live is completely Shatrughan and Nitin. Okay. कुछ ऑडियंस के सवाल है. हमने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला था, तो बहुत सारे लोगों के सवाल है. I'll ask those questions. In between, I have some more questions. I'm gonna ask those questions as well. थोड़ा सा मजाक करेंगे अभी. So पहला सवाल है कि म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर होती है करने के लिए? A VPN. No, but to be honest, I think a lot of people start with zero skills. They mess around and they find out. So I think कि messing around, तो curiosity, I think that skill you need more than like whether you can play a keyboard or whether you can program a beat and stuff like that. I think the reason why we went from A to B is only because we were curious कि ये कैसे बना, वो कैसे बना. तो I think curiosity is the main thing कि आप कितने curious हो to explore that genre. सीखने का कितना मन है आपको? आजकल यूट्यूब आने के बाद मेरे ख्याल से अगर आप म्यूजिक प्रोडक्शन शुरू भी करो, बेसिक सवाल भी खुद लिखना शुरू करो, तो आप एक अच्छा काम सीख सकते हो. डिपेंड्स ऑन योर थिंग. फिर आपकी एकेडमी, ऐसी और भी एकेडमीज होंगी, आई एम श्योर. राइट. एंड सर अभी तो मतलब यूट्यूब इज फुल ऑफ ट्यूटोरियल्स. मतलब इतने सारे मीडियम्स है जहाँ पे आपको फ्री इंफॉर्मेशन मिलता है. So there is no excuse to not learn. But like Rishabh said, कीड़ा होना ज़्यादा important है than the skill. Skill आप develop कर लेते हो over time. ढूंढो कीड़ा है कि नहीं, वही स्किल चाहिए. ओके. सो 3 अलग अलग सवाल है एक ही सवाल में कि आप इंस्पायर कैसे होते हो, आप हर बार प्रोड्यूस करने के टाइम में क्रिएटिव कैसे रह पाते हो, और तीसरा जो आप सिग्नेचर बनाते हो हर एक गाने में, वो कैसे बनाते हो? So I think इंस्पिरेशन के लिए आई फील कि मैं, अगर आप मेरे को एक एल्बम के सामने प्ले करके रख दोगे तो मैं सुनूंगा नहीं, पर मैं अब्जॉर्ब करूंगा. और आई नो दैट कि कहीं ना कहीं वो वापस आएगा. तो आई थिंक इंस्पिरेशन आई डोंट फाइंड वो हार्ड वायर्ड है कुछ ना कुछ. बिकॉज मैंने बताया कि आई कम फ्रॉम अ म्यूजिकल बैकग्राउंड फैमिली एंड लाइक वी लिव इन अ चॉल सिस्टम. और रूम का साइज लाइक साइज ऑफ दिस कार्पेट. तो स्कूल होती थी 8 बजे और माई डैड यूज टू वेक अप एट 5 टू डू हिज रियाज, और हारमोनियम लेके 3 घंटा ग्रिल होता था मैं, क्योंकि आई नेवर यूज टू अंडरस्टैंड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. मैं बच्चा था.
तो वहाँ से वो जो भी हार्ड वायर्ड हुआ है इट स्टिल कम्स आउट इन माई म्यूजिक. तो आई वुडंट से कि मैं वो इंस्पिरेशन ढूंढने गया था. तो आई थिंक कहीं ना कहीं से तो आ रहा है. आई लिसन टू एल्बम्स लाइक बैकग्राउंड में चलता रहता है. देन आई रियलाइज कि अरे ये तो यहाँ पे सुना था. तो आई फील अदर पीपल्स म्यूजिक इज ऑफ लाइक ग्रेट इंस्पिरेशन टू मी. और जो जिनके साथ हम काम भी कर रहे हैं, लाइक यू नो देयर आर रैपर्स दैट वी आर वर्किंग विद, द 20-year-olds, यू नो, लाइक विद न्यू फ्रेश आइडियाज, दे आर ड्रिवन, दे हैव नथिंग टू लूज. तो उनका मतलब that attitude also kind of inspires us. So I think inspiration comes from there mostly. Music that we have grown up listening to. Sorry, what was the second question? ये हर बार प्रोड्यूस करने में क्रिएटिव कैसे रह पाते हो, और वो जो क्रिएटिव सिग्नेचर बनाते हो आप, वो कैसे बनाते हो? हाँ, लाइक पहले भी आई थिंक प्रयाग मेंशन कि वो सिग्नेचर आई थिंक करने जाएंगे तो होगा नहीं, यू नो, कि वो यू कांट क्रिएट अ सिग्नेचर, यू कैन डिस्कवर अ सिग्नेचर ऑफ योर्स. तो हमारा भी ये डिस्कवरी ओवर टाइम हुआ. नाउ आई फील कि कहीं ना कहीं लोगों को पता चल जाएगा कि ये ऋषभ प्रयाग ने प्रोड्यूस किया है गाना. इट्स अ सर्टेन क्वालिटी टू इट और वट एवर इट इज, एक्सेप्ट फॉर द वर्क दैट वी डू फॉर अदर पीपल. क्योंकि वहाँ पे आई डोंट थिंक कि किसी ने गेस किया होगा कि वी को क्रिएटेड अनूप जैन्स हुस्न फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि दैट वाज को प्रोड्यूस्ड बाय अस. सो आई डोंट थिंक कि वहाँ पे सिग्नेचर डालना ज़रूरी है. बट या आई फील कि वो सिग्नेचर ओवर टाइम डिस्कवर हुआ. नाउ वी ट्राई टू बी माइंडफुल अबाउट इट कि हर जगह घुसाना नहीं है, अगर नेचुरली आ रहा है तो. आपने कविता भी को प्रोड्यूस किया था Correct. फॉर न्यूक्लियर. या सो ये आपने रिसेंटली शुरू किया है प्रोड्यूस करना, राइट? या वी वांटेड टू मेक लाइक अ सेपरेट पॉप म्यूजिक के लिए अलग एलियस करना था, जहाँ पे हम फोटोशूट नहीं करेंगे, इंटरव्यूज नहीं करेंगे, कुछ प्रेशर नहीं चाहिए था. खाली म्यूजिक, कीप योर हेड डाउन, मेक म्यूजिक विद लाइक ऑल आवर फोकस, कि लेट द म्यूजिक स्पीक फॉर इटसेल्फ. और वो क्या हो रहा था कि लव स्टोरीज के अंडर अगर सब रिलीज कर रहे थे तो एल्गोरिदम भी थोड़ा मेस हो रहा था, कि प्रॉबली एल्गोरिदम वुडंट नो वेयर टू सजेस्ट अस, क्योंकि वो सिमिलर आर्टिस्ट में कुछ भी आ रहा था. तो आई थिंक इट वाज वन ऑफ द good move that we have made to separate two things, and we have 2 or 3 songs on the Jay Sean album coming up and all of that, all different sounds. तो वहाँ पे algorithm की कुछ हम लोग को ये नहीं है कि let every kind of music come out. तो and learning our lesson, जब भी हमने Law Stories नाम रखा था, we kept getting asked कि क्यों है नाम 10 साल तक. ये हमने सोच के रखा था, पूना, It's called pop Pune. under new alias. Yeah, PUN. We were like कि ये टाइम अगर कोई भी आके पूछेगा कि पूना क्यों है, so then you know it's pretty straightforward. Pop under new alias. Yeah. सो जो आप म्यूजिक प्रोडक्शन दूसरों के लिए करते हैं उसका नाम आपने अलग से दिया है, पूना. अभी yes, yeah. So जो भी like if collaborations भी होता है उसपे. The dream is to do a feature album on it, जैसे वो Metro Booming करते हैं US में, and like lot of super producers like Timbaland and all of these guys do. तो वैसा एक dream है कि 5-6 साल में maybe we'll do a feature album with everyone who we have worked with. पर उसमें like we'll be the first, like obviously we'll be the artist on it. आप लोगों ने काफी आर्टिस्टों के साथ काम किए. आपके ड्रीम कोलैब कौन सी बची हुई है जो आपको लगता है कि सर ये अब तो चालू ही नहीं हुआ है ड्रीम कोलैब्स. आई थिंक A.R. Rahman definitely. 100%. I think he likes our music, but he's never blatantly said it. दोस्तों से कभी कभी पता चल जाता है. I feel like everything I do is to get one step closer to sir. क्योंकि मेरे जो भी दोस्त है, मैं आई थिंक सबकॉन्शियसली दोस्त भी वैसे ही बनाता हूँ जिनका सर के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप हो. तो सो आई थिंक दैट देन अमित त्रिवेदी सर फॉर श्योर. I mean, we've like grown up listening to these guys. Yeah, and Santosh Narayan, Harris Jairaj. Yeah, like, so, I mean, the list is endless, you know. I don't think, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, like, it's only just begun. और आपने जैसे आप एकेडमी में आप लोग पढ़ाते भी हैं और बहुत लोगों से मिलते हैं. Yeah. Any young talent you come across you think is going to break the industry or be the future? So many, yeah. बहुत सारे जन हैं इनफैक्ट. जब भी हमने चालू की थी अकेडमी, वी थॉट के मेजॉरिटी प्रोड्यूसर्स या डीजेस निकलेंगे यहाँ से. बट वी आवरसेल्व्स वर शॉक्ड जब भी हमें पता चला कि काफ़ी जन म्यूज़िक बिजनेस भी बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं. सो करंटली जो लास्ट ईयर के अलुमनाई है वो फिलहाल यूनिवर्सल में काम कर रहे हैं. एक है जो वार्नर के साथ काम The कर guy रहे who's हैं. scoring films and stuff as well. Yeah, Shravan Mantri, for example, very talented songwriter. I think he graduated 2 years ago and he has already landed a sync deal in 3 OTTs.
So it's just something that even we haven't been able to figure till now. But you know, it's brilliant. DJs bhi hai, Chimera hai, Chimera is one of who's them. doing really great. Vinik karke hai, who has done exceptionally well. These are all from the first batch, garage wala Yeah. jo batch tha tab se, like, you know, so yeah. Rahil hai, the dancing DJ. He's from the academy, the first student that we had, in fact. So a lot of people are doing really एक्चुअली well. आपके एकेडमी के लिए एक सजेशन है. आपके एकेडमी में जितने भी बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ते हैं, थर्सडेज और मंडेज रात को 8 बजे उनको म्यूजिक पॉडकास्ट देखना कंपलशन होना चाहिए. 100%. I think we did forward some links. Yeah, in fact, a lot of people do follow it. Then we'll expect a masterclass from you whenever, like. That can't do any which ways. Then it's Chalo, cool. sorted. Yeah. We can only share our experiences. अब उसमें से वो सीख के कैसे यूटिलाइज करेंगे. Exactly, yeah. That's what. So even we don't teach film scoring, for example, but they made something out of it, you know. So I think it's so important to let people be कि ऐसे बोलना नहीं कि यही सीखा है तो यही बनाना है. Yeah, I mean, as opposed to बाकी जो schools में एक ही कोर्स 3 साल तक चलता है, हमने क्या किया है, हमने 1 साल का कोर्स बनाया, बट 6 अलग अलग चीज़ें डाली है. So 2 महीने म्यूजिक बिजनेस होता है, 2 महीने प्रोडक्शन होता है, 2 महीने मिक्सिंग मास्टरिंग होता है. द आइडिया ऑफ डूइंग दिस कोर्सेज, आप आइए, आप समझिए कि क्या क्या होता है, learn that for 2 months and you get an overview of the entire industry. फिर आप देखिए कि आपको कहाँ स्पेशलाइज करना है. कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके राइटर्स ब्लॉक में अटके पड़े, और राइटर्स ब्लॉक से डील कैसे करते हो आप लोग? सर कभी कभी तो राइटर्स ही ब्लॉक कर देते गाना. It's very sad but it's true. But that's a story for another day. So I think we calculated It's too like much. there are too many songs, you know, कि I think as a practice मैं अभी जब उठता हूँ पहले म्यूजिक पॉडकास्ट देखता हूँ, फिर I go into the room and I produce. So and like Prag comes over in the afternoon and sometimes we go through ideas and stuff. So I think we are constantly building. Rick Rubin से सीखा है, you know, that I think Nuclear spoke about him when he came here. So he's like, you have to turn up, show up every day. कुछ आया नहीं आया. It's like you don't have to win wars with music, right? So बनाओ, कुछ आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, you know. And then once you have a larger body of work, then you can A&R it कि ये अच्छा नहीं है. So बहुत सारे songs stuck है writers block में, but we also do believe that हर idea का एक time होता है. And we look at ideas as like entities, you know, कि जब idea को मन होगा तब आएगी, and then आएगा. Force it doesn't happen. Yes. So yeah, writers block में तो बहुत है. What's your experience of working with Kashmir? Am I pronouncing it right? Kashmir, yeah. Kashmir, yeah. On Bombay Dreams, and what do you think of Nuclear on the Indian EDM scene? So I think personally we both have immense respect for Nuclear, because I think that if there's one guy who deserves it all, it's him. Mainly because we have seen him struggle. Like we have seen him play like empty shows. We have seen him like, and with a smile. Like there was never a time when like floor khali hai, so he's not gonna give his best and all of that. So I think, and then when he did all of those things like playing at a Visarjan, you know, like those are like genius ideas. You know, he took something that was right in front of all of us and he made it work. So we have immense, I think, respect for him. And I think he's one thing I don't think a lot of people would talk about him is like, I mean, he wouldn't mind me saying this, but like he got success at a much later stage of his life. So he was wise with his money, you know. हम लोग को इंडिया में फेलियर के साथ कैसे डील करना सिखाता है, सक्सेस के साथ कैसे डील करना वो लेटर समझ में आता है. तो व्हेन वी मेड ऑल आवर इनिशियल मनी वी उड़ाउड इट, यू नो, वी नेवर लाइक रियली इन्वेस्टेड इट एंड ऑल ऑफ दैट. बट आई थिंक दैट्स वन थिंग लाइक वी लर्न फ्रॉम उद्यान इज दैट अगर पैसा भर भर के आ रहा है तो फिर भर भर के उड़ाना भी नहीं है. लाइक यू हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर फैमिली, ऑल ऑफ दैट. सो immense respect for him. And same goes to Kashmir. He's like a big brother to us, and he has helped us out at every point of our career, like whenever we knew him. In fact, the first time Ayushman met him was हम लोग एक फेस्टिवल प्ले कर रहे थे, मिस्ट्री लैंड, और मैं और आयुष्मान इंडिया का फ्लैग लेके क्राउड में खड़े, एंड वी डिड नॉट नो कि कश्मीर वाज गोइंग टू प्ले आवर सॉन्ग, एंड आउट ऑफ नोवेयर ही प्लेड आवर सॉन्ग, और लाइक still have goosebumps when I discuss that story. And yeah, after the set I introduced myself to him. I'm like, hey bro, you played my song. And he was the kindest. He invited us to his table, and like that friendship is like so strong. So like ऐसे ज़्यादा लोग हैं नहीं. Like he's like a meta human, you can say. So yeah, I think by far he's one of the most talented
producers. 100%, yeah. He uses the same software as us. He's very extremely talented when it comes to music production. And he's helped so many people for free. Like, all of uske jo sample packs aate hai, you know, like entire industry is running on those packs, like literally, you know, and like obviously like he's helped out people in a much larger way than they know. So max respect to Kashmir. तो अगला सवाल है कि हर ईडीएम प्रोड्यूसर और डीजे आजकल टेक्नो या टेक हाउस के तरफ कन्वर्ट हो रहा है. आपके हिसाब से ईडीएम कल्चर और इसका फ्यूचर क्या है? तो सबको कूल बनना है. सो आई थिंक एक पॉइंट पे बिग रूम मीडियम कूल था तो लोग वो करते थे. एंड अब आई थिंक टेक हाउस कूल हो गया. थोड़ा nonchalant hai, you know, like hands are not in the air all the time. Having spent enough time in the industry, we all know that ki music is very like cyclic in nature, ki ek trend जाएगा फिर दूसरा आएगा, and now you can predict almost कि अब क्या next आने वाला and stuff. So but काफी आर्टिस्ट पहले से भी मल्टी जॉनर प्रोड्यूसर्स रह चुके हैं. एंड आई थिंक द गुड थिंग इज अभी क्योंकि टेक्नो ज्यादा ट्रेंडिंग है, यू नो, दे गेट अ चांस टू शो देयर अदर साइड. And I think every artist has like a slightly underground side. I think we were at Ushuaia. I think either Swedish House Mafia or someone was playing. DVLM was playing, and they are the resident at Tomorrowland. तो वो लोग अपना set, main stage set, जो मतलब काफी noisy EDM set हो with gimmicks and all of that, वो खत्म किया मेन स्टेज पे और ग्रीन रूम में आए. immediately started playing underground set for like 100 people in like a small room. So I think everyone wants to release that part of them as well, you know, ki both of them have like two different sides. So now they play like so many different tech house Everybody sets, does. I think even Martin Garrix, he plays a very different sound when he's not playing festivals. Yeah. So काफी artists के ऐसे अलग-अलग genre sides होते हैं. Like many others, I have learned music production from YouTube as well. I wish to pursue it professionally, but do not have any context or reference in the industry. For someone like me, what practical advice would you give so that I can kickstart my journey other than releasing independent songs? Does it also become necessary for someone like me to join a music academy? I don't think it's necessary at all. अगर आप खुद के इस पे सीख सकते हो तो आपको कोई अकेडमी, कोई स्कूल की ज़रूरत नहीं है. We could give our examples. जब भी हमने चालू किया, हमने literally you know गाइड्स और मैनुअल्स पढ़ के चालू किया है. सो आज भी बहुत जन है जो करते हैं. स्कूल अकेडमी इज एब्सोल्युटली अननेसेसरी. अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन. आप फिर भी ये परस्यू कर सकते हो फुल टाइम. ओके, सो अगला सवाल है कि कौन से सवाल है जो आपसे नहीं पूछे जाने चाहिए कभी भी? कि डीजे क्या करता है, कितने पैसे बनते हैं, और कौन से वो मुद्दे हैं या जो टॉपिक्स है जिन पे बात ज़्यादा होनी चाहिए फॉर श्योर और आपसे पूछे जाने चाहिए, आपको लगता है? I think definitely like mental health angle is very important. We all in like a giant experiment, you know, right now we feel like social media and like the hustle culture, all of these things की वजह से लोग इतने burnout हो रहे हैं. I am myself burnt out. और लोगों को लगता है कि burnout you can fix in like one Goa vacation. आप 5 दिन जाओगे और fix हो जाएगा, but ऐसे नहीं होता है. The people who I used to advise हमारी company में almost 2 साल पहले to take it थोड़ा easy, you know, take care of their health, mental health, physical health. That time, obviously, they were like, no, it's all good, you know, you focus on yourself, don't tell us what to do type thing. पर अब जाके वो लोग आ रहे हैं. और recently I met a producer yesterday at some album launch. और मैंने वाया like I used to see him, I think he used to work at a studio. और हम जब गिटार रिकॉर्ड्स करने गए थे उसके पास, वो फ्लोर पे सोया हुआ था एंड उठाने का मन भी नहीं किया because he was working all night and all of that. You know, monthly they have like delivery of 200 tracks or whatever it is. I used to tell him via friends क्योंकि मैं इतना close नहीं था उसके. तो I used to tell him, ask him to take it easy. He's such a fine talent. You know, you don't want to like lose out on, you know, valuable time. And like you have to pace it. लोग अभी क्या कर रहे हैं, 10 साल का मजा 1 साल में squeeze in करने की try कर रहे हैं. तो then rest of the 9 years we'll have to suffer in some way or the other. So I feel mental health is like so important. And like we discussed that, you know, some people find it, they don't want to talk about it. It's a very personal thing. But I feel like when you do talk about it, when I spoke about mine, you know, the amount of, like you get to know firstly that you're not alone. And then it's a giant relief. And then yeah, I mean, then you have to undo whatever damage you've done to yourself anyway. So yeah, I feel that needs to be spoken about more for sure.
So आपने कैसे डील किया, if I were to ask you? So I've been dealing with anxiety since a very young age, or I think little bit of a background. Before Law Stories, my family, we take care of a temple. एक proper temple है घाटकोपर में. So till the age of 16, I was मेरा life थी school, home and temple. So I was a pandit and helped out with every kind of temple activities and all of those things. So कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो anxiety बैठ गई थी, but like I was not being able to articulate. वो vocabulary नहीं थी कि किसी को बोले, और parents that time they be like, oh कुछ खा ले ठीक हो जाएगा, कुछ ये कर ले ठीक हो जाएगा. But that kept building up, and then I realized music was something that helped me relieve it. कि जब मैं music बनाता था तब I was very calm. When I used to play music, when I used to go on stage, मैं एक अलग इंसान बन जाता था कि I was very confident, I was very articulate with like everything I was doing. So I feel music became like a soothing balm. Obviously it was not a it was not a fix, but it was a very temporary fix. Then like I think alcohol comes into the scene, and then it helps you relax and stuff. So I don't think there is any solution to it. When I think 2-3 साल पहले I started talking to Prayag about it, and started talking to Ayushman about it, that I'm going through these problems, and I'm not being able to perform on stage. At first, obviously, they're like, kya ho raha hai? Like, it was very hard to understand because these problems are so personal. But over time, I feel like they have supported me in a way that they'd be like, oh, this seems like Rishabh could get triggered with this, so let's not do it, and stuff like that. So I feel having the right people around me has helped. And obviously all of us have like our own routine protocol that we do. You can never get rid of anxiety. We can manage it. So yeah, I'm managing now. Yeah. Good, you've been able to speak about it. Yeah. मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको समझ में भी नहीं आ रहा है, और जो प्रॉब्लम में भी, और कहीं ना कहीं हम सब लोगों को किसी ना किसी लेवल पे एंजाइटी होती ही होती है. सो एंड यू राइटली सेड, वो खत्म नहीं होती है. Yeah, you have to manage उसको it. मैनेज कर सकते हो, और जब आप एक बार कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो एंजाइटी जब आती भी है Yeah. तो शायद आप थोड़ा डील बेटर तरीके से कर पाते हो 100%, yeah. उसको. और आजकल तो एक्सपर्ट्स भी, ऑनलाइन एक्सपर्ट्स हैं, आप सीक्रेटली और डिस्क्रीटली भी You can, लोगों से yeah. बात कर सकते हो. और Yeah, बहुत therapy is big, so Correct. yeah, I guess a lot of it helps. ग्रेट. अगला सवाल है कि व्हाट डू यू थिंक सेट्स द इंडियन इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन अपार्ट फ्रॉम द ग्लोबल लैंडस्केप? I think it's just the variety of genres that exist in India. आपको folk मिल जाता है, Bollywood मिल जाता है, ये है, वो है. I mean, there are so many options and there are so many combinations which are possible, which I don't think is the case globally. मतलब genre-wise it is, but in terms of languages, cultures, region, everything, it's so vast in आपको India. genre I think US में मिलेगा, but उसके सब genres South East Asia में मिलेंगे अलग-अलग, So in a way, Law Story sub genres also, like we liked electronica and we liked folk, so we just combined nuclear. Probably liked a lot of South Indian music and bass music. So we, like subcultures were like, I feel that's what sets us apart. I think India is so rich musically in each Yeah. ways. It's a continent. So yeah. With so many cultures living together. Okay. Next is, what technological advancement or software tools have been game changers for you in the electronic music production process? Microsoft Excel to keep my everything for him. Sir, every week I get an Excel sheet जो समझ में नहीं आता है. So, but It's just to keep him like organized. But yeah, I mean, there are so many tools. So अभी many, तो yeah. AI is completely integrated in DAWs. So एक स्टेम अलग से सेपरेट कर सकते हैं आजकल तो, मतलब वोकल निकाल सकते हैं गानों से, और जो मतलब पहले रिकॉर्ड हुए थे ऑन लाइक टेप, उससे भी निकाल सकते हैं. एंड आई फील बहुत से टूल्स है सर, बट टू गेट इनटू इट विल बिकम अ वेरी नर्डी पॉडकास्ट. बट आई फील जस्ट being able to, like, I mean, I would say something like a chat GPT also, helps you. Like if I ask chat GPT, like, can you help me with a rollout plan for my EP? The basic सा structure मिलेगा. Rest of it you have to go to Ayushman only, but एक basic सा structure मिल जाएगा. And then you can navigate your way through it. So I feel with AI stuff, that's like a lot. फिर भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर तो आप लोग यूज करते ही होंगे प्रोडक्शन. Ableton we use. So there is a software called Soothe.
तो Soothe is basically like an, I would say like a automatic EQ. तो in a way अगर आपका कोई रिकॉर्डिंग है, मान लो आज का कुछ रिकॉर्डिंग है, उसमें कुछ डिस्टर्बेंसेस आ गया है, या तो फिर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो यू डोंट वांट टू कीप डकिंग एवरी टाइम, तो यू जस्ट पुट दैट प्लग इन, वो सब काम कर लेगा. इट्स लाइक अ मैजिक प्लग इन, लाइक सब लाइक मैक्स मार्टिन, जेसन जोशुआ, सब लोग ये यूज़ कर रहे हैं. तो आई फील दैट प्लग इन हैज़ बीन अ गेम चेंजर, एंड लाइक आई थिंक whoever's watching this will like little expensive, but wait for Black Friday. You'll get it at like half the rate. So Soothe is one of the, it's made our job much easier. So yeah. आप करंटली एआई को अपने म्यूजिक और प्रोसेस में कैसे यूज करते हो? क्या क्या यूज करते हो एआई से आप? So it's become Google for me, honestly. I feel like anything I need to do, like say for example, if I have to make like a quick, what do you call it, like the chronology of like a song. So you know कि पहले record करना, like we are working on another artist's album as well right now. So to figure out कि पहले क्या होगा and all of that stuff. So instead of breaking someone's head, and the thing is you can be rude to ChatGPT, it's not human. So you can just like, I'm kidding, I'm not rude to ChatGPT if any AI is listening. But yeah, like we use it for a lot of management There are kind so of stuff. many AIs listening through our phones right now here. Yeah, don't kill me. But no, I think for like a lot of mole monkey sort of work, we use ChatGPT. Okay. Sometimes to write lyrics as well. Yeah, well, a lot of clerical work gets sorted Yeah. using AI. जो पहले बहुत time लगता था to keep writing and all. Okay. What role does mixing and mastering play in shaping the final quality of the tracks? And how do you ensure a professional finish? Best not to ask me this question. I can finish a song in 45 minutes and I can take 3 months to mix it. So It's a endless process. मतलब there is no 100% perfection that any producer can achieve. Yeah. आपके लिए जो अच्छा है वो इनके it's लिए. very subjective. Yeah. So I mean, as a producer, you draw a line कि ठीक है, this is industry standard. ये आप जाके play कर सकते हो festivals में या clubs में. But I think I think it's important Yeah. to a certain degree. I take 3 months is because I enjoy the process of it. I love, you know, like right now we are mixing the album over this software called Muse. So matlab it's like Zoom for musicians. So engineer Delhi mein baitha hai. He has a control of my mouse and keyboard, and he's listening to high quality audio Yeah. via his speaker, and we are mixing it online. And I'm having so much fun, you know. So I'm like, let's take our time, you know. It's okay. There's no deadline. But to to it. give you another example, we recently had a track in a movie, Do Aur Do Pyar. And the track was done last year. Last year ही project खत्म हो गया था. And the recently, I think 2 months ago, उनकी team, they got back to us. उनको और एक नया version चाहिए रहता था. Radio mix या जो भी था. So Rishabh opened the project. And then you start comparing again, right? Like वो time के लिए वो mix master perfect था. And now that, you know, वो एक अलग mix चाहिए, वो project खुला, so वापस mix master हुआ होगा. It took a month. Every time you go back to your project, you're not going to be happy with it. But I think to answer the question, for me, I think personally, mix master is super important. It can change the shape of the song. But there are also some really badly mixed songs which are doing great. So people are like, only nerds will be like कि इसका mix अच्छा है. But ज़्यादा लोग बोलेंगे कि इसने lyrically अच्छा काम किया या तो गाया अच्छा है. So I feel like only producers and like mix engineers will notice the mix first. But I feel subconsciously होता होगा, you know, कि अगर mix strong नहीं है तो it could be a problem. ओके, अगला सवाल है कि आपके ओपिनियन में कौन से की ट्रेंड्स और इनोवेशंस हैं जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोडक्शन के फ्यूचर को शेप कर रहे हैं और आप उनको कैसे अडेप्ट करते हो? सर टू बी ऑनेस्ट, अभी जब हम बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेट में है एज लॉ स्टोरीज कि साउंड भी बदल रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, तो वी आर एक्टिवली ट्राइंग टू नॉट लुक आउट फॉर ट्रेंड्स, क्योंकि अगर ट्रेंड्स के चक्कर में एल्बम बना दिया तो ट्रेंड तक ही चलेगा एल्बम. सो वी आर ट्राइंग ऑल्सो नॉट टू लिसन टू और लाइक ऑब्जर्व व्हाट अदर पीपल आर डूइंग एंड स्टफ. बट आई फील लाइक रॉ साउंड क्वालिटी could come back in some form because everything is too perfect right now. Everything is too polished and it feels almost like manufactured. Daft Punk, for example, when they started, they had all this cheap, really cheap equipment, okay, and they abused that gear. आजकल वो होता नहीं है, you know, like people are almost scared to abuse the gear कि टूट जाएगा तो मतलब whatever. But I feel कि that
freedom that people had with their gear and stuff like that, I feel that is coming back in some way or the other. Ki people are okay with music sounding dirty. Dirty in the sense like sound-wise, like raw and dirty. So, And also the quality has become so clean मजा नहीं that आता. yeah, I mean now you use analog to put noise in your digital recording, you know, just to make it a little more human. Yeah. उतना clean हो गया. So I think it needs to go back to basics a little. Yeah. करेक्ट. और किसी भी यंग आर्टिस्ट हो या आर्टिस्टों को सोशल मीडिया इफेक्टिवली कैसे यूज करना चाहिए? कैन यू गिव सम आइडियाज? मेरे तो मत ही पूछो. I think it's the best place to showcase your work. Yeah. And it's the best place to network. It's very difficult to, like you said, it's important to interact with people on a personal basis. But I feel like if we didn't have, say, Yahoo Messenger, MSN Messenger back in the day, we would not have been sitting here because most of our work happened there. So I feel it's still a great place to network. Yeah, I mean, where else can you showcase your work apart from all of this? Like, हम कभी-कभी अच्छे gigs इसीलिए बजाते हैं कि वो social media पे अच्छे दिखे, you know. So, Shatrughan will fire 2 more shots in the air so that it looks good on social media. I don't think Sadly, it's become that, but Yeah, but I mean, social media is not a problem. Doom scrolling is. Like endless scrolling में आप and some चले people जाते have हो. an addictive personality. Yeah. So, yeah. Wow. एंड सोशल मीडिया के अलावा these days YouTube is important. Yeah. Streaming is very important. Yeah. So how much both of you are involved in tracking views कितने हो रहे हैं, streams कितने हो रहे हैं? I'm not the numbers guy, but like I think Ayushman is a data guy. Yeah. And YouTube has been nothing but supportive all throughout like our careers, I feel. We were a part of Foundry, which is their program, and YouTube Next Up as well. So we did few songs under those things. So I think Ayushman gets whatever data he requires out of I think like, we follow Spotify analytics and all. yeah. And general things like कहाँ से users आ रहे हैं, demographics क्या है, and all those things kind of help us, but not too much. Like we go to Ayushman if we need more Yeah. data. I think personally we need to disconnect from numbers also because numbers don't make sense to us. There's probably like say Salman Khan has 2 million monthly listeners on Spotify. So it doesn't make sense to compare yourself with an actor जिसके नाम पे गाने आ रहे हैं. So I feel a lot of it is not relevant to an artist. Yes, if your management knows how to use those numbers, that's a good thing. But I feel comparing ourselves to like random vanity metrics, it's a disappointing thing. Sometimes you feel the FOMO कि बॉलीवुड में अगर गाने होते तो ऐसा होता. No. Not me, at Not least, at all. because we I like our mean- freedom, I feel, too Yeah. much to like. Because with Bollywood, I feel like the director is a king in a way, and like it's also not a democracy. Like not everyone gets a say, you know. So I feel ki yeah, and sometimes your creative vision is too strong to let it be manipulated by someone else. So. But yeah, I mean, there are miracles that happen like Mani Ratnam sir and A.R. Rahman sir, for example, or Anurag Kashyap and Amit Trivedi. So, yeah. Okay. मैं आपको एक एक टर्म बोलता हूँ. आपको आज के दिन आपके लिए उसका क्या मतलब है? Sure. आप बताइए. Being a musician and you both can have a separate view. You caught me off guard. it's so much, right? Like to be a musician, I think जो skill set चाहिए, that used to be the most important thing at one point of time. But now the minute I think of a musician, it's everything else but the art. So I think that's one of the reasons why people are so skeptical of getting into this. When they hear from other people in the industry कि अरे you want to be a musician, तो आपको ये लगेगा, आपको वो लगेगा, आपको manager चाहिए. Even before you put out your first song. Scheme बेचेंगे. Yeah, so it has a very different meaning today, but sadly. I think same for me, it's losing its core value because I feel like we are competing in the same pit as YouTubers, influencers, and everyone whose background is not core music. And you can't even stop anyone from doing music. It's a way of expression. Yeah. But charts पे तो सभी को compete करना है, top 10 ही होता है, you know. So I feel like it's losing its thing. But I think it's also very लोग
एज अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट भी कभी यूज़ करते हैं क्योंकि आई रिमेंबर दिस स्टोरी आई वाज एट द एयरपोर्ट एंड देयर वाज दिस पर्टिकुलर पर्सन हु यूज्ड टू आई थिंक वर्क विद द सेम मैनेजमेंट एंड वी हैड नेवर मेट वी नेवर स्पोकन तो मैं बैग्स लेने के लिए खड़ा था एंड शी केम टू मी एंड शी इज़ लाइक हे यू वर्क विद आयुष्मान राइट सो आई एम लाइक या एंड शी इज़ लाइक यू आर डीजे राइट so I'm like yes it's like oh I'm a musician so I was like okay and I mean so I feel like sense of entitlement भी होता है लोगों के लिए कि मैं musician हूँ and stuff so I feel कि at the end of the day I use music to express myself that's why you have so many angry songs coming but Yeah. yeah Makes sense now. ओके सक्सेस का क्या मतलब है आपके लिए? I think it's happiness at the end of it. क्योंकि success is again subjective. किसी के लिए Tomorrowland play करना success होता है. किसी के लिए could be the #1 song on Spotify. But I mean, personally, I know so many people who are not happy even after achieving it. So I would rather equate success with happiness. जो भी है, as long as you're happy, then you're successful. Okay. For you, Rishabh? recognition. I don't think there's anything about it for me. I want to be recognized for not only recognized, but for everything that I do with music. So, yeah, recognition. Short answer, but yeah. And what does music mean to you? Yeah, it's very simple. Form of expression, for sure. Being an introvert, being very reserved, I think music is a medium through which, we freely express. So I think it's the best thing I personally have found to express myself. I think it's a way of life. Everything I have around me is due to music. Literally every single thing. So I think it's a way of. I can't think of a life outside of music. So it's a way of life. And because you have both come from humble families, and you've been the first in the business, in the music, and you have also not seen really a great success in your family in music. You're the first one to get success on that scale. And you've seen कि आप लोगों ने ना खुद नेविगेट किया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की है. अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो उस जर्नी में है, क्योंकि आपने वो जर्नी जी है. और सबका अलग अलग होता है, लेकिन आपके हिसाब से कौन सी वो 2-3 बातें जो कि इंसान को ध्यान रखना चाहिए कि वो करनी ही चाहिए, और कौन सी वो 2-3 बातें या चीज़ हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? आप मिलके भी बोल सकते हैं. So I think personally, family support, and family can be people outside your immediate family also. Family support and environment is one game changer. I feel like agar mere paas my family would have not supported me, because throughout school I was very ashamed of my background, because like in school I used to lie and tell people that I live in a different address, and like I never used to own up my story. Much later, when I realized that money is not everything, then I started owning up to that story. And now I feel like I could have said that other story also when like we did give interviews, that we come from a very humble background, हम लोग के पास कुछ नहीं था and all of that stuff, and we never had like a, as MC Stan would say, haath varti, like we didn't have a hand helping us on top of this. But yeah, but I feel the better story to tell is ki how privileged I am, because like the way my family has supported me in every step, I think it's very essential. They let me build a studio in the house. My dad bought me like one of those arranger keyboards, which I used to go to nurseries, like make the annual day shows and all of that. So I think that is a privilege, and we keep forgetting that we get to do this. Not many people get to do this. So yeah, I mean, like I think sometimes people get things too easily, and and you take it for granted. Yeah, they don't value it enough. Yeah. I think one thing which people should definitely not do is take health for granted. There are enough stories. काफी जन बात कर रहे हैं now very openly about mental health. But health in general takes a toll with time. Yeah. And I think music industry, because it's so glamorous on the, the outlook of it is so glamorous. Young artists, they try to go for the shows, quick money, fame, you get something to talk to your friends about. But the idea should be to think about it in the long run. So instead of doing like 50 shows in a year, probably do 5 shows, but for way more money, right? But ये चीज
वहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम लगता है. बट आई थिंक ये इंडस्ट्री में 10 साल 15 साल काम करके फिर समझता है दैट यू शुड हैव टेकन good care of your health. Maybe, you know, listen to your parents when they said, don't do this, don't do that. Yeah. Any one thing which you would like to change in the music industry or the ecosystem? I can see there are lots you want to change, but Everything, maybe. I think everything. We also try to replicate a lot of the West, पर वो इंडिया में नहीं चलता है. तो और we have grown up listening to like, you know, Mo Shalizi and like not grown up I would say, but in the recent times कि वो लोग के methods of working are very different in the US. Everything is very, तो वो इंडिया में नहीं चलता है. You know, in India में you have to be street smart and stuff. So I don't know, like India में it's all about jugaad, right? Like shout out Jugaad. No, but honestly, I mean, I feel it needs to be a lot more organized. I think all about music should happen on a much bigger scale in different cities, because there are so many people who miss out on it, who want to be a part of it, who want to learn something about the industry. I think you know, there's no one place of resources which people can dwell into to understand कि क्या है ये industry. And because the industry is so big in India, कितने सारे genres है, labels है, it gets even more complicated and difficult. true. Okay. And आप लोग दोनों इंडिविजुअली और एज लॉस्ट स्टोरीज, आपके जितने भी चाहने वाले हैं, हाउ डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड और हाउ डू यू वांट टू लिव इन देयर माइंड? I think for me as an individual, I just want to be remembered as someone who made them smile when they listen to our work. It's as simple as that. मतलब अगर if you're having a bad day and if you if a song by Lost Stories is making you feel better, then it's brilliant. Like, that's it. I think something similar. I want to not be indifferent in someone's head. Like, I want to make them feel something with the music that I write. And yeah, like we get so many messages about like people suffering with like their mental health, and उनको सुकून मिलता है, you know, जो भी हम गाने बना रहे हैं. So again, it's a big deal for us. So I feel कि if something that we do in our little home studio is actually making a difference in someone's life, that's what like we want to be as Lost Stories. That's what like I feel we want to be remembered as. तो आज पॉडकास्ट करके मज़ा बहुत आ रहा है, तो एक एडिशनल बोनस क्वेश्चन कि हम जैसे जब छोटे थे और हम भी बहुत लोग, इतने इंटरव्यूज मिलते नहीं थे, लेकिन हम कोशिश करते कि सबको सचिन बनना था फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेटर को देख के, और कैसे बने यार, कोई तो रास्ता होगा. एंड अब इजी तो है, फिर भी कभी कभी ना जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वही पता नहीं चलती. क्योंकि सोशल मीडिया पे भी आपको थोड़ी सी फ्लैटेड इन्फॉर्मेशन होती है. हर आदमी अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है रियलिटी में, हम सबको पता है. तो अगर कोई लॉस्ट स्टोरी जैसा बनना चाहता है या वो काम करना चाहता है, what is that one most important thing they should ask themselves or they should do which will make it possible for them? I think I read this recently, and it's very, very much for the current time that we are in. Is that like, do you really want it, or do you want others to see that you have it? You know, in a way that sorts pretty much everything out, because like then you'll obviously like social media पे लोगों को दिखाना भी है that, you know, okay, I have so and so collaboration, or this is my clout or whatever, and deep inside, if you're actually with that cloud in a room, you feel maybe left out or whatever it is. So I feel if you really want it, or do you really want to show people that you have it, is a question that can change pretty much everything for you. Actually, it's very well said. You want to add to that? See, I think it's more about challenging yourself. Like, the reason why I got into this was because a lot of people thought I won't be able to. I maybe myself thought कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा शायद. So for me, to get into something very seriously, it needs to be challenging, and then I'm serious. But I mean, there are people who are different, right? मतलब काफी जन एक टाइम पे, एक एज पे उनको पता रहता है कि उन्हें क्या करना है. Like, I want to be a doctor, I want to be a pilot. मेरे लिए वैसा नहीं था. I never knew that I wanted to be a musician or a DJ or a producer. I just got into it. So I think if you are really willing to challenge yourself to the fullest, then you can.
ऋषभ, प्रयाग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट. बहुत मज़ा आया. Thank you, sir. आई एम श्योर कि हमने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं उसमें से आप लोगों की कहानी बहुत अलग है. आप लोग जो करते हो बहुत अलग है. आप लोगों की जो अचीवमेंट्स है वो बहुत अलग है. जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं एक्चुअली आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ पहले आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा लव स्टोरीज़ के बारे में. थोड़ा सा पढ़िएगा, उनके गाने सुनिएगा और उनकी अचीवमेंट्स की लिस्ट एक बार देखिएगा. आपको समझ में आएगा कि उन्होंने इतने से कम टेन्योर में और एक अलग जगह बनाई है अपने काम से, और एक अलग ही दुनिया है. वो दुनिया बहुत ही अलग है. जब आप दुनिया देखोगे ना तो आपको इस पॉडकास्ट की हुई सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएगी. विद दैट थॉट, थैंक यू ऋषि. Thank you so Thank you so much, sir. Thank you. I would like to see like a tag team with Arijit sir and A.R. Rahman, because I had seen one of their previous interviews, and like with that, I could see Arijit sir's inner child asking A.R. sir the questions. So I feel that I would love to see that again. And with the TM sir added to the mix, I think it'll be pretty epic. Yeah, I mean, a weird mix of two hip hop artists who don't really go well with each other. Like a together. live diss track. Yeah, like not a diss, but I think if there's anybody out here who could make it happen, it's him.